are deficit days? क्या होते हैं deficit days? Are they really important for your body or even just for your sake of just recovering? No. Let me explain you why. See, deload week बहुत important इसलिए होता है because आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है that not every time when you're pushing very hard and you're going to the gym, so every day since then when you have started doing gym, you're always thinking of doing PRs, you're always thinking of doing something which is making you feel like yaar bas ab now I have to shatter down all my limits and break the limitations. But that's where comes the suffering of the body. Why? Because CNS fatigue, yani ki central nervous system, that is a key point which is to be remembered always whenever you're doing any kind of exercise. Because जब भी आप वर्कआउट बहुत let's say 10 years के लिए कर रहे हैं, what's actually happening is that you are hampering a lot of your joints, your muscles. हाँ, you're giving it protein, you're giving it creatine, you're giving it pre-workout, you're giving all sorts of good diet in the kitchen, and you know you're having good diet, you're sleeping 7 to 8 hours, but still the load week is a very important week amongst the whole cycle of the month, which is like week 1, week 2, week 3, week 4. Why? Because let's say if you're lifting good standard amount of weights like a bench of 100 kgs, a squat of 150 kgs, and a deadlift of let's say 180 kgs, that is really good. But important बात ये है कि you need to understand that whenever you are going into the deload week phase, you need to literally, you know, diminish all of those weights and pull it down to let's say um, half of the kgs you're doing. Let's say bench pe aaya, so you just need to do 50 or 60 kgs and do a lot of volume work. Why? Because that's going to prevent you from having injuries in the future. क्यों? क्योंकि जब आप लेट्स से लेग्स मारने गए एंड आप लेग्स मार रहे हो एंड यू आर डूइंग लेट्स से एवरी वीक 120 kgs, 130 kgs, there's a lot of hypertrophy happening, you're gaining strength, you're becoming stronger. But at the back of it, when you, if let's say अगर आपको कोई इस वक्त एक्सरे करता है, तो you'll understand that so many micro tears are happening in the body. And उस वजह से deload week then comes into the picture because it's really important. Because जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, उसका एक वेरिएशन जब आपने शुरू किया था, व्हेन यू लिटरली स्टार्टेड डूइंग जिम, यू स्टार्ट फ्रॉम दोज वेट, राइट? क्योंकि जब आप वो उस वेट से शुरू कर रहे थे एक्सरसाइज, तब आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता, नाउ इट्स रियली ईजी फॉर यू एंड देन यू आर लाइक यार वो करने की ज़रूरत क्या है. बट द थिंग इज़ कि जब आप लेट्स से हाफ ऑफ योर वेट्स मारते हो जिम में जाके एंड देन यू नो यू आर नॉट दैट एक्साइटेड एंड वो मोटिवेशन होती, बट देन दैट इज़ एक्चुअली टेलिंग योर मसल्स टू रिकवर मोर फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली and grow more efficiently. Because मैं खुद कंपाउंड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट एट द सेम टाइम कभी कभी मैं बस जिम जाके बेंच प्रेस सिर्फ 70-80 kg से बहुत सारे रेप्स मारता हूँ एंड देन आई जस्ट कम बैक होम. You don't have to always stick to what you're doing. Shock it off, even if it's, you know, contributing to doing more repetitions and volume work, because your muscle is still getting that shock that, oh, today it's not just going heavy, today it's just about maybe more of reps. तो उस दिन भी आप वो पम्प फील करोगे, you'll be like यार dude मैं तो इतना वेट उठाता भी नहीं, but at the same time आज इंटेंसिटी बहुत अच्छी फील हो रही है because you shocked the muscle in a different way, and it's always good for that. So that's why it's really important to have deload week phases as well in between the cycle of week 1, week 2, week 3, week 4. Any one of those weeks where you can alternate it, and let's say week 2 pe you can go deload and other 3 weeks you can go heavy. Or for advanced lifters, I would say week 2 and week 4 plus adding up some rehab exercises as well for longevity. Because यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कोई भी बंदा जब वर्कआउट कर रहा होता है ना, they don't understand this fact that it's very very important to go through the deload phase week and also doing some rehab exercises for your joints. Because जब आप you know पर्पसली बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे होते हो, पर्पसली आप बहुत ज़्यादा वेट मार रहे होते हो, तो आपके जॉइंट्स पे, आपकी मसल्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है. नो मैटर हाउ गुड डाइट यू आर डूइंग, नो मैटर हाउ गुड स्लीप यू आर टेकिंग, बिकॉज constant pressure on your skeletal structure and your muscle structure
is happening every day and you're recovering, I know, but it's a body. ये कोई बहुत divine energy नहीं है कि मतलब एक दिन में सब ठीक हो जाएगा. Let's say you take 2-3 weeks of gap and आप कुछ नहीं करते, and then you come back to gym, you'll feel so much better. Yes, you will be a bit like थोड़ा सा पतले हो जाओगे maybe because you're losing that muscle size, but understand that वो चीज़ उतनी अच्छे से वापस आएगी एक हफ्ते में if you train after that. So my whole point is deload phase बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे महीने की साइकिल में, एंड इवन रिहैब एक्सरसाइज एज वेल इफ़ यू कैन एड इट अप, बिकॉज उससे होता क्या है, आपकी बॉडी में जो कांस्टेंट टेंशन्स और प्रेशर्स होते हैं वो कम होते हैं, एंड उसकी वजह से यू आर एबल टू लिफ्ट मोर. इट जस्ट डजंट मीन दैट एवरी टाइम यू गो डू द डिलोडिंग फेज एंड उसमें आप अपने वेट्स को हाफ करके मार रहे हो. दैट्स नॉट द पॉइंट. मेक इट टू एन एफर्ट वेयर इट बिकम्स लाइक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट एट द सेम टाइम यू आर एबल टू लिफ्ट इट very nicely as well. Good 10-15 reps. That is the best spot. Try to have like a goal कि यार मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, तो मुझे उसके लिए अपने आप को हमेशा ये समझाना बहुत ज़रूरी है that you need to have a deloading phase and you need to have a rehab phase as well of the body so that it structures itself more nicely for future and have a more stronger body and stronger bones and stronger joints. So yeah, that's how I feel about the deloading phase, and that's how I feel about that. You should actually put this into your regime and routine so that you feel more stronger. Thank you. Jai Shri Ram, Jai Hanuman.